ಓಕೆ, ಈಗ ರೀಸನಿಂಗ್ ನಾಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅವ ಥಿಯರಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ನೋ ದಟ್. ಮಾಡೇನಾ? ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ದ ಥಿಯರಿ, ರೈಟ್? ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಒಳಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ಸ್ 26 to 30 ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಈ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ let us say 2 minutes, 1.5 to 2 minutes ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾವ ಆಕ್ಚುಲಿ. 1.5 to 2 minutes ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾವ inequalities. So in today's paper, question numbers 26 to 30. So there are certain ground rules. Understand the ground rules, right? What? I'll give you one example. Example of the question. Question is A is greater than or equal to B. B is equal to C. This is one set, and B is less than D and D is less than E. First क्या करना है, ಏನ್ ಮಾಡೋದದ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. So there is one conclusion which says D is greater than A, and then there is another conclusion which says E is greater than C. मार्क कैसे करना है? मार्क A, B, C, D or E. And what do you mean by mark? Means if only one is true, if only conclusion 1 is true, if only 2 is true. Now either 1 or 2 is true. Either neither is true, both are true. इतने ही हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज. सारे पॉसिबिलिटीज इसमें कवर हो चुके हैं. What is the meaning of conclusion? Conclusion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿನಗನು ನಿನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾಗ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಟ್ರೂ. ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದು ಟ್ರೂ, ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್. ಎರಡು ಕಾಣಿಸ್ದು ಎರಡು ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಯರಿ ಅದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ reach this speed. It takes less than this. But this is a good speed. Even if you reach 2 to 3 minutes speed reach ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ 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 ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾವ. ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇದೇ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಸೆಟ್ ಲೇಟರ್. This was the example of how the question looks, how the conclusion answering pattern ಏನದ, and actually what is the meaning of conclusion. ಈಗ ನೀನು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದಿ ಅಂತಂದ್ರ ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ. ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಟ್ರೂ, ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಏನದ, I'll give you some examples. A is greater than B, B is greater than or equal to C, C is equal to D, D is less than E. Alright, suppose this is a statement. This is the statement. Now, rule number 1. Rule number 1. कभी भी क्या करता है, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ? They will ask a relation between two elements. Let us say A and C, or B and D, or C and E. A and B के बीच में नहीं पूछेगा, वो आजू बाजू है, ठीक है, दूर का पूछेगा. तो रूल नंबर 1,
Suppose he is asking relation between A and C. Rule number 1 is all the signs should be in the same direction. अगर same direction में है, only then you can draw a conclusion. Same direction में नहीं है तो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. जैसे C और E के बीच में एग्जाम्पल देखो. C और E के बीच में कौन सा साइन लिखेंगे उसको बोलते हैं कंक्लूजन. A और C के बीच में कौन सा साइन लिखेंगे उसको बोलते हैं कंक्लूजन. वही कंक्लूजन तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में दिखना चाहिए, तब वो ट्रू होता है. अगर नहीं दिखता है तो ट्रू नहीं है. तो उसका सबसे पहला रूल क्या है, देखना ही नहीं. पहले क्या करना, ए और सी और ई के बीच में वो कुछ भी दिए सो रहने दो. ಅವನು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಇ ವೆದರ್ ಆಲ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ or in this statement, between C and E all the signs are in the same direction. Acha, idhar bhi same direction ada illi, idhar bhi same direction. I'll introduce one more. Maybe let us say that this is F. He is not asking between C and E, he is asking between C and F. Between C and F, see whether all the signs are in the same direction. No, all the signs are equal to का कोई डायरेक्शन नहीं रहता. इक्वल टू ಎರಡು डायरेक्शन नाग सेम इರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ equal to ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. तो between C and F the signs are not in the same direction. So इधर कुछ भी लिखो, conclusion is false. ಏನೇ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, conclusion is false. No conclusion follows. कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते. तो यह है रूल नंबर 1. रूल नंबर 2, ये तो हो गया. रूल नंबर 2. नाउ लेट अस से बिटवीन ए एंड सी हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है. पहले वो मान लो कि ऐसे दिया है, दिस इज हिज कंक्लूजन. नाउ आई हैव टू टेल वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. I have to tell whether it is true or false. ठीक है? And maybe here he has given like this only, right? And third also I will give. Let us say. Now I am testing between A and C, right? So first rule is satisfied. All the signs are in the same direction between A and C. All right? All the signs are in the same direction. तो इधर क्या करना है कि सबसे बड़ा साइन लिखना दोनों के बीच में. तो सबसे बड़ा साइन क्या होता, सबसे बड़ा साइन पहले ये होता, उसके बाद ये होता. इक्वल टू का कोई मीनिंग नहीं है. A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D. That means everything are equal. So then मतलब ಇಲ್ಲ, everybody understands that. Problem ಬರದೇ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಎರಡರೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ ಯಾವ್ದದ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಎರಡರೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ ಯಾವ್ದದ, ಇದು ಅದು, ಇದು ಅದು. इधर क्या दिया है हमको, हमारा कंक्लूजन ये है, दिस इज आवर कंक्लूजन, दिस इज क्वेश्चन. मैचिंग है क्या, नहीं है. सो कंक्लूजन इज फॉल्स, कंक्लूजन इज फॉल्स. अच्छा, नाउ दिस वन, B is greater than or equal to D ಅಂತ ಅವ್ರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ನಾನೊಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಸೈನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಟ್ರೂ. ನಾನೇನ್ ಸೈನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ. ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅವ ನೋಡಿ ABCDE ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದದ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ B and D, first rule, all the signs are in the same direction. Yes, all the signs are in the same direction. Okay, B and D ಒಳಗೆ ಎರಡು ಸೈನ್ಸ್ ಅವ. One is greater than or equal to, another one is equal to.
बड़ा साइन कौन सा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बड़ा साइन। उन दोनों के बीच में सबसे बड़ा साइन क्या है वो लिखना है। पूरा इक्वेशन दागिंದ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವೆರಡರ ನಡು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. This conclusion is true. The most effective use you will see here. ಇದೇ actually ನಿಮ್ಮ confusion ಇದೆ. Actually ನಿಮ್ಮ confusion ಇದೆ. Statement says A is greater than B, B is greater than or equal to C, C is equal to D. And I have to draw a conclusion between A and D. Right? ಎರಡರ ನಡು ಒಂದು ಸೈನ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ ಇದು, ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ साइन ಇದು ಇದು मैचिंग ಅದನ. सो ट्रू, इतना ही है, इतना ही है. अब ये साइंस रिवर्स में रहते तो सेम रूल अप्लाई होता, सबसे बड़ा ये होता, बाद में ये होता. ಎರಡೇ ಇರಬಹುದಿಲ್ಲ, ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಗ ಇದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐ ಮೀನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿತ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್, okay? So what will you write between A and D? ಇದೆ सबसे बड़ा साइन, ये सबसे बड़ा साइन अर्थ ಇದು ಅಲ್ಲ, सबसे बड़ा साइन अर्थ ಇದು ಇದು ಇದ್ದಾಗ ಇದು, ಇದು ಇದು ಇದ್ದಾಗ ಇದು. A and D ಒಳಗೆ ಯಾವ ಸೈನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಇದೆ. B and E ಒಳಗೆ ಯಾವ ಸೈನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಬಿಟ್ವೀನ್ B and E सबसे बड़ा साइन इधर है, लेस से B और F के बीच में कौन सा साइन लिख सकते हैं? B और F, कुछ भी नहीं, अपोजिट, नो रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन के साइंस है दोनों के बीच में, नो रिलेशन, नो रिलेशन. इतना ही है, इष्टे अದ. ओके, ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ. So marking pattern I will not copy, marking pattern already explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, so I will not copy. Okay, now take the first question. D is greater than or equal to K, ಬರ್ಕೋತ್ ಕೂಡೋದು ಬೇಕಾಗೇ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗ. K is less than or equal to H, H is equal to O, N is greater than J, J is greater than जो है जो सो है. अब क्वेश्चन is N is greater than K, N is greater than K, whether this will be true or false, that is the question. Okay, first thing, find where N is and K is. N is here, K is here. N and K में कॉमन कौन सा है? देखो N and K में कॉमन है H, तो दोनों का H के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करो पहले, तो दोनों का H के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करो. तो इधर क्या दिया? K is less than H, इधर क्या है? N is greater than H, ठीक है? N is greater than H, that means H is less than N. एक ही बात है, N is less, N is greater than H दिख रहा है. N and H के बीच में सबसे बड़ा साइन कौन सा है? ग्रेटर देन होगा. That means H is less than N, N बड़ा है तो H छोटा है, तो I can write it like this. Same thing I can write like this. And N is greater than H means H is smaller than H.
तो अब देखना है के और एन के बीच में सारे साइंस एक ही डायरेक्शन में आए क्या? सारे साइंस एक ही डायरेक्शन में आए। रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं के और एन के बीच में? कंक्लूजन वो क्या दिया है? एन इज ग्रेटर देन के। दोनों मैचिंग है, दोनों मैचिंग है, ಎರಡು मैचिंग अव। सो कंक्लूजन 1 is true. Now try the same thing for conclusion 2. Conclusion 2 says P is greater than less than D. P ಮತ್ತು D ಒಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ? P ಮತ್ತು D ಒಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಅದ K. So on one side it is P is greater than K. Then next D. D is greater than, D is also greater than K. दूसरा बोल रहा है D is also greater than K. तो इसको मैं अगर इधर लिखूंगा, मिलाऊंगा, तो ये लिखूंगा ऐसे K is less than और ऐसे आया ना, लेस देन और इक्वल टू D. पहले इधर K राइट में था, D लेफ्ट में था, इधर K लेफ्ट में आया, D राइट में आया, तो साइन भी चेंज होना चाहिए, एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। रिलेशन बन गया, दोनों P और D के बीच में रिलेशन अदा रिलेशन ಅದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾವ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನದ? P ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು D ಅದ. ಸೊ ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. This sign and this sign are not matching. My conclusion is this sign. This is only less than sign. This conclusion is false. This conclusion is false. So answer I will mark for this is only one is true. Answer A. Answer A. ये सेम वीडियो YouTube पे जाने वाला है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो आराम से. Now in this U and J, ಈಗ ನೋಡು, ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಒಂದು ಒಂದು ಅಂತ. U and J, what is the common between U and J? B. So first write what is the relation between U and B. U is greater than B. And what is the relation between B and J? Same side of no problem. B is less than J. So no conclusion at all. So false. No conclusion at all. Now what is common between K is greater than L, or K between K and L? Common ಏನದ K and L ಒಳಗೆ? Again B. B ने ಇರೋದಿಲ್ಲ? हाँ, तो पहले B और L का रिलेशन एस्टेब्लिश करो. तो B और L में सबसे बड़ा साइन है B is greater than or equal to L. अब दूसरा है B और K के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करो. K is less than or equal to B. ಎರಡನೇ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ K is less than or equal to B is less than or equal to K. ठीक है. अब B के राइट में जगह खाली है, इधर K को इधर लाना पड़ता है मेरे को, तो K को इधर लाना है, तो K के राइट में जगह खाली है. इधर क्या हो गया? B के लेफ्ट में जगह खाली थी, तो B को इधर लिए थे. दैट मीन्स हियर B विल कम इन द लेफ्ट एंड K विल कम इन द राइट. तो K अगर राइट में आ रहा है तो साइन विल रिवर्स द डायरेक्शन. सो दिस विल बिकम लाइक दिस. क्वेश्चन इज K इज ग्रेटर देन और इक्वल टू L. K और L के बीच में अगर मैं रिलेशन लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा? रहने कोई एक साइन है दोनों के बीच में, मैचिंग है, ट्रू. आंसर ऑप्शन B. Answer option B. Okay, same thing for question number 3. Is whatever E is greater than F. Now I have to draw a conclusion between E and F. What is common between E and these two equations? J. नहीं, क्या है? V. V. So first is E is greater than V. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು. आफ्टर सम 10-15 पेपर्स ये भी नहीं लिखते, वो दिख जाता तुमको. E is greater than V है, इधर क्या है? V is greater than or equal to F है. अब दोनों E और F के बीच में ग्रेटर देन साइन है, वन इज ट्रू. नेक्स्ट J एंड S में क्या है कॉमन? J एंड S में अगेन V है. पहले तो V और J में कोई रिलेशन नहीं है, तो J एंड S में कोई रिलेशन आएगा ही नहीं, वट एवर यू ट्राई.
बिकॉज देर इज नो रिलेशन बिटवीन, कॉमन इज जे वी है जे और एस के बीच में, तो जे और वी के साथ कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली फॉल्स रहता है। जे और वी के बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा, साइन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है इधर, तो कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। जे और वी के बीच में कॉमन है, जे और एस के बीच में कॉमन है वी। इधर कुछ भी रहने दो साइन, इधर कोई भी साइन नहीं लिख सकते, तो इसको कंपेरिजन नहीं कर सकते, बच गया टाइम। नेक्स्ट, सो ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, आंसर इज ए। नाउ 9, C and K. So C and K, what is common? X. C and K, what is common? X. So first here establish what is the sign. There is no relation between C and X. तो पूरा पूरा फॉल्स रहता है, अपुट्टा फॉल्स आता है, तो रिलेशन ही इल्ला, ट्राई नहीं करना। कई को ट्राई करते? D and S, what is common between D and S? Again X. D and S, X and S के बीच में रिलेशन है, तो हम क्या करते हैं अब, X and S के बीच में है ग्रेटर देन, X इज लेस देन और इक्वल टू S। दूसरा X and D के बीच में क्या है, सेम थिंग, X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D, तो X बड़ा है, तो X बड़ा है, बड़ा करने का है मेरे को बस, तो D और S के बीच में रिलेशन आ गया, सेम साइन, दिस इज ट्रू, आंसर इज B. Answer is B. Okay. Now, in this one, between N and T, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇರ್ತದೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. N and T ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಅದ, H, and what is the sign between N and H? N is greater than H. Alright, what is the sign between H and T? H is greater than or equal to T. What is the sign between N and T? N is greater than T. Matching ada, true ada. M is greater than I. Again, what is common between M and I? H. तो पहले H और I का रिलेशन क्या है? H is greater than or equal to I. M और H का रिलेशन क्या है? M is greater than H. तो M और I के बीच में क्या रिलेशन है? M is greater than I. Matching ada, true ada. So both are true. तो आंसर ऑप्शन 5 और E. ऑलराइट, इष्टे थ्योरी अदा इतना ही है। अब ये समझ में आ गया हम कितना इसके ऊपर जितना टाइम डाले उतना टाइम इसके ऊपर डाले, क्या है अभी का अभी। तो ऐसे एक 200-300 क्वेश्चन हो गए तो तुम भी 2 मिनट से 3 अंडर 2 मिनट्स लेवल को आ जाते, 2 मिनट लेवल को आ जाते। ओके, so if you have still not followed, same video is going on the YouTube. Alright, so ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಚಲೋ.